थैंक यू। नमस्कार। आज संडे 20 नवंबर 2022 को इस डॉक्टर के HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में जो हम एवरी संडे एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट की मीटिंग करते हैं और उसमें आज जो हमारा टॉपिक है, अभी आप लोगों ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि एक COP27 अभी कंक्लूड हुई, तो उसी रिलेटेड है। टॉपिक है इंडियाज लो कार्बन स्ट्रेटजी एंड आउटकम ऑफ COP27। जो 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उसको यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। अभी जो COP27 हुई है, इट टुक प्लेस बिटवीन 6 to 18 नवंबर इन शर्म एल शेख, इजिप्ट, एंड इट वाज जस्ट कंक्लूडेड। और जो डिसीजंस हुए हैं उस पे पर्टिकुलरली हमने इस पे 2 सेशन किए हुए थे बिफोर गोइंग टू देयर, इंडिया का क्या स्ट्रेटजी है और क्या पहले हुआ है और क्या होना है। बट आई थिंक देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो उसमें इट वाज द मेन डिसीजन वाज टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेशनलाइज जो है लॉस एंड डैमेज फंड, जो अभी हमारे मिनिस्ट्री के थे और रिप्रेजेंटेटिव ने भी अजय राघव ने एक बार इसका डिटेल्स में प्रेजेंटेशन भी दिया था, बताया भी था कि बहुत डिटेल में हमने करीब 2 हफ्ते पहले किया भी था और डिटेल में बताया था कि इंडिया का क्या प्लान है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज था कि जो लॉस एंड डैमेज फंड के लिए, सो एक ये डिसीजन है वेरी इंपॉर्टेंट कि टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेशनलाइज लॉस एंड डैमेज फंड। और इसमें जो पर्टिकुलर डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और ऑल्सो द मेकिंग गुड ऑन लॉन्ग डिलेड जो प्रॉमिस ऑफ द डॉलर जो 100 बिलियन जो इन ईयर इन क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इसी से रिलेटेड जो यूनाइटेड नेशंस जो के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो ग्यूटेरेस ने, उन्होंने he called for a giant leap on climate ambitions, and he also stressed the need to drastically reduce emissions now. He said the red line we must not cross, that takes our planet over the 1.5 degree temperature limit. During conclusion, he asked the world not to relent in the fight for climate justice and climate ambition. And he said we must win the battle for our lives together. And he concluded this session with the note that word to more to go on action. The whatever decisions taken is also very good for developing countries. और इसके साथ ही जो हमारा बिफोर इंडिया ने भी ऑन नवंबर, इसी कॉन्फ्रेंस में इंडिया ऑन नवंबर जो है 14 को दिस रिलीज इस लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट एक्शन स्ट्रेटजी है, जैसे इंडिया लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, उसको LT लीड्स बोलते हैं, उसको रिलीज किया। इट विल बी डीलिंग हाउ इट विल टेक स्टेप्स लाइक rapidly expanding renewable energy sources and exploring the great role of the nuclear energy to reach out to India's net zero emissions by 2070. India also turned up the heat on developing country to do some more. That was because India definitely is better if you compare the listing, जो whatever the score वगैरह रिलीज हुआ है, India is in good position as compared to the नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस में हो या जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शंस में हो। सो अदर कंट्री पर्टिकुलर डेवलप जो कंट्रीज हैं उनको दे हैव टू बी मोर ऑन दिस साइड एंड टू डू मोर। तो इसी के साथ हम एक इस बैकग्राउंड के साथ इस जो हमारी आज का जो टॉपिक है, इस पे हमारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली इसमें डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा
अपने हमारे इस ग्रुप के मेंटर पार्थोस त्यागी सर से कि उनके कमेंट के साथ, क्योंकि ये कई कॉप जो है होती जा रही, 27th है, कॉप 26 हुई पहले, और भी कॉप होती रही है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, कितना चेंज मतलब जो है ये गोइंग टू विदेश ये डिसीजंस हैं, कितना इंपॉर्टेंट होगा। और डेफिनेटली इंडिया का जो लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे फोकस मोर ऑन दी रिन्यूएबल साइड, और जो हमारे लाइफ का भी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रिशिएट किया गया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये सब चीजें भी बहुत इंडिया की तरफ से जो कि हमारे तो कल्चर में भी है, कंजर्वेशन और ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग, तो उसमें भी है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो विल रिक्वेस्ट सर पार्थो त्यागी सर टू स्पीक अबाउट दैट। ओवर टू पार्थो त्यागी सर। Thank you, Dr. Anil Kumar, and greetings to all who are present here. जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कैमरा ऐसा एडजस्ट कर लें जो उनका चेहरा नजर आए। और कॉप के बारे में मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं जानता कि वहाँ क्या क्या डिस्कस हुआ और क्या निर्णय हुआ, मगर जिस सब्जेक्ट को हम लोग पिछली मीटिंगों में डिस्कस कर चुके थे, लॉस एंड डैमेज फंड का, उसके बारे में आप बात आगे बढ़ी है, ये बात जान के खुशी हुई है। मुश्किल यही है जो बार बार कहा गया है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, कुछ चीज़ें पॉलिटिसाइज कर दी गई हैं, जिनकी की वजह से कन्वर्जेंस ऑफ थिंकिंग एंड एक्शन टेकन, उनमें वो बात नहीं आ पा रही है जो कि आने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैं इस सिलसिले में दो एक बातों का जिक्र करना चाहूँगा जो कि डायरेक्टली कॉप से कंसर्न नहीं है, मगर क्लाइमेट कैपेबिलिटी से कंसर्न ज़रूर हैं। एक तो ये कि जो ये एपिडेमिक था कोविड का, उसने हम लोगों को ये बहुत सिखाया कि किस तरह से डाइट और लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज, इन चीज़ों की मदद से कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो जब भी एडवर्सिटी आती है उस वक्त आदमी, वल्नरेबल आदमी खास तौर से, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में आ जाता है, बीमार पड़ जाता है और खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर पाता। वीकर सेक्शन सफर्स मोर देयरफॉर। तो ये जो आइडिया है कि इट इज़ पॉसिबल कि जो आदमी फ्यूचर में विक्टिम हो सकता है वो विक्टिम ना हो के एक अच्छा फाइटर बन सके, इसकी पॉसिबिलिटी है और देखी गई है कि ये पॉसिबल है। उस डायरेक्शन में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो ऑलरेडी ट्राइड चीज़ें हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या अपनी वाइटैलिटी बढ़ाने के लिए, तो उनको फॉलो अप करना बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जब क्लाइमेट बहुत वेरी करेगी तो अनाज कौन सा उपजाना चाहिए उसमें भी बड़े सतर्क होने की ज़रूरत है। और हम लोगों को अपनी एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ा वाइडन करने की ज़रूरत है। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये मिलेट्स के बारे में एक प्रोग्राम को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की है, वो बहुत ही टाइमली है और बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह के एक ही प्रोग्राम नहीं और अनेक प्रोग्राम हो सकते हैं, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द variations in climate, and some of them are likely to be quite unanticipated also, and many of them are well anticipated also. So in both cases, preparations will serve both the purposes to face the likely adversities that we may face. But with these few remarks, I thank you to give me time to express my views. Thank you, sir, for your motivating words. Definitely जो है ये चीज़ें इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले भी होता रहा कि मिलेट्स वगैरह पे हमारे हम लोग जो है हेल्दी भी रहते थे और ये काफ़ी होता था। एंड बैक टू दी सर्किल, हम अभी उसी पे आ रहे हैं डेफिनेटली। बट हमें प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, हमारी फूड सिक्योरिटी को भी देखना पड़ेगा और डेफिनेटली हेल्थ को बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, कि सो अवेलेबिलिटी है। और डेफिनेटली तो हमारे जो आपने बहुत अच्छा इम्पार्ट कही, जो इस कोविड जो आया पैंडेमिक में, इसमें जो डाइट है, लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और हमारे डॉक्टर के अग्रवाल सर ने तो इन तीनों पे ही फोकस करके सबको एजुकेट किया।
वो हमारा उनके डेली लेक्चर्स जो होते थे, सुबह से 7 बजे से स्टार्ट लेक्चर्स उनके शुरू होते थे और रात में 10-11 बजे तक मैं देखता था। उनके डिफरेंट फोरम में चलते रहते थे। उनके अपने प्रिस्क्रिप्शंस भी होते थे साथ में कि कैसे आपको बचाया जाए मेडिकल के साथ, इनके साथ साथ जो मेडिसिन का भी। बट उन्होंने सबसे जो डाइट का इम्पोर्टेंट, जो उनका एक प्रिंसिपल हमेशा रहा है और सब जगह अवेलेबल है कि आपकी जो 7 कलर्स और 6 डेट जो टेस्ट की डाइट जो है, सारे कलर्स आपको चाहे फूड हो, वेजिटेबल्स है, वो खाने चाहिए। और जो 6 जो टेस्ट हैं, जो सीड्स और बिटर, पंजेंट और ये आपको डाइट में, और सबसे फोकस उनका रहता था कि जो लोकली अवेलेबल हैं जो चीजें, उससे एक तो आपका कार्बन फुटप्रिंट भी थोड़ा सा उसका कम रहेगा, और लोकली ग्रोन जो है, वो जो कहते हैं सबसे सस्ता जो है, जो आप वेजिटेबल्स मिले वो सबसे अच्छी है, बिकॉज वो लोकली ग्रोन वहाँ का होगा, और वो बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी, वो सबसे बेस्ट है उस समय सीजन के हिसाब से। या सीजनल जो हम वेजिटेबल्स भी लेते हैं, चाहे आज विंटर में डिफरेंट हमें देखते हैं, ये सब अवेलेबल हैं। तो ये डाइट पे बहुत बड़ा फोकस था। लाइफ स्टाइल हमें कैसी होनी चाहिए और किस तरह क्या क्या ध्यान रखें, ये सब डॉक्टर अग्रवाल ने इतने भी इनके वीडियो हैं, जितना भी सोसाइटी के लिए किया, तो आज आपका ये सर बहुत अप्रिशिएट किए, हमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और अपने जो भी इस तरह का इंडिया का है जो लाइफ स्टाइल है, चाहे लो कार्बन जो एमिशन स्ट्रेटजी अभी डेवलप की है, उसमें सबसे सभी का भी फोकस इसीलिए किया गया कि कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सर आप फॉर योर ग्रेट वर्ड्स। नाउ दिस आई विल गो फर्दर, एंड मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एस के त्यागी सर से। आज सर हमारे बीच में बहुत दिनों बाद आप आए हैं, इज बिजी पर्सन, तो मैं डॉक्टर एस के त्यागी जो एडिशनल डायरेक्टर सीपीसीबी में रहे, सर आपका त्यागी सर। हेलो, एम हाँ आई नमस्कार। ऑडिबल? यस सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, अनिल जी, परितोष त्यागी जी और सभी जो भी और गणमान्य अतिथि हैं। मैं कुछ पिछली मीटिंग्स में समय नहीं दे पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं सर, स्टिल आई वाज बिजी आपकी ब्लेसिंग टुडे रहती है सर, आल्सो, हमेशा ब्लेसिंग है, बिल्कुल। so I find some time that let me join your this meeting, very important meeting on the COP 27, and uh, uh, worldwide, if we see, all the countries are putting their efforts how to minimize the climate change effects and greenhouse gas emission, so that we can have a better environment and living conditions on this planet. And 4 pillars of this COP27, which have been deliberated in detail, are ending the deforestation and clarity on the Article 6, climate adaptation that is fit for the purpose, and loss and damage funding. So these were the 4 major pillars of the discussions, and there are yet to be more clarity required on how these projects or the credits of the carbon reduction will be traded and climate partners will implement them. So yet we have to see the clarity on the mechanism. As we all know, and that was the COP26 main agenda also, that deforestation as recorded by the satellite is at a very high pace, say roughly 3.75 million hectare, or you can translate that into 10 football pitch per minute disappearing rate for the
forest. So at this very fast rate, we have to arrest that, and we have to do national greenhouse gas emission inventory so that we can make a good action plan to reduce those greenhouse gases which are responsible for the climate change. And our country has many plans which can be discussed separately towards the net zero by 2070. And the major contributor to the greenhouse gas emissions, particularly the oil industries, power plants, and oil and natural gas commission are doing pioneering strategies in this regard. So I thank Anil ji and HCFI for giving me this opportunity to share my views for short, because there are other participants also who would like to contribute. So thank you very much, Anil ji. Thank you, sir. Thank you for very summarized and very well explained way that for the whatever the major decisions that for that, and very important area that India is contributing that. So thank you, sir. Now I'll request Dr. Ravinder Kumar, who is a chief scientist in CRRI, Center for Research Institute, CSIR. So particularly his contribution in transport sector is really for India is excellent. So I'll request Dr. Ravinder Kumar. Good morning to all of you. Yeah, good morning. A lot of things has been said by Dr. S.K. Tyagi regarding net zero emissions and all. Of course, in the transport sector also, we are doing many things parallelly, starting from the fuel changes, start from the we are going towards the electric vehicle, we are going towards the ethanol, blended fuels, we are going towards the hydrogen. Apart from that, what we have to also focus, already we have the old tradition of pedestrians and bicycling. And of course, in if you see the household population of two-wheeler and bicycles, they are mostly more than 50% in every household in India from transport perspective. So already we have the facility, and there are a lot of scope to further go for the cycling and pedestrian modes. Only thing is, like in urban areas, we don't have pedestrian friendly tracks, we don't have cycle friendly tracks. Because if you look at the transport length, trip length, normally our trip length are more than 50 to 60% trip length are below 6 kilometers. And that is possible through the cycling. If you make the cycle friendly, probably 50% of the trip can be catered through the cycling. And that's the point of what Dr. Tyagi told about the zero emissions. We can switch over to that, not full, but at least 50% of what is available with the trip length. So trip length is one of the things which impact the energy as well as fuel as well as the carbon. So that is the one of the requirement from the even it's not only the from government side, it has to be changed from the government as well as the other stakeholder as well as the mindset of the behavior.
how we can change our people behavior, how we can make them more friendly. Once we talk about the developed country, once we talk about the Europes and all, we know the Netherlands. They are having the largest bicycle trips. Although we just have the justification that their cities is smaller in length. But of course, cities is smaller in length, but we have also, Delhi has so much pockets. If you break into the different pockets, and many of the people, many of the commuters, they live, I think more than 60% they live nearby. Of course, I know that there are housing issues and trip length has been increased over the period of time because of change in the land is pattern. And we have seen that new cities like Noida, Gurgaon, other adjoining cities along the periphery of the Delhi because of the housing problems. And in that case, our public transportation system like metros and bus transport system, and if that can be further improved, probably we'll be able to sort out another 20% of the problems to the more eco-friendly mode. And then coming to the private vehicles, what we use, we go to the rapid changes towards the fuel. That already we have announced the Delhi electric vehicle policies, and many of the states they have already announced, and they are targeting that at least within the next 2025, they have to bring out up to level of 50% into the fleet. That's the very difficult target because already we have existing vehicles, and for the existing vehicles, again, we have to look into the cost benefit aspect as well as the scrapping policy of the government, and as well as enforcement policies, because many of the vehicles they are not being checked with the PUC routinely. They have no insurance. There are so many issues when they operate on the roads. So all this complexity creates the another dimensions for the fuel as well as the carbon things. So overall, if we look into decarbonization of the transport, so what I vision that one cycle mode is already decarbonized, and already almost in each household one cycle is there in urban area, and even in rural areas this is quite popular. Apart from that, yeah, of course, for a longer trip, we have to look into the better public transport system. Already metros are coming, bus transport system, and I have seen that even for bus transport also many cities like Surat, Ahmedabad and other, they have very good dedicated bus corridors. That's called the bus rapid transit system. That's quite equivalent to the metro corridors. They have all the high-tech information system, high-tech speeds and quality they maintain. So probably that aspect, if we add it in other cities also, hopefully we'll able to achieve our this decarbonization of transport factor. Another aspect is like we are having the airport traveling, airway travel. Probably this has not been taken into account till date, how much pollution we are making, because it's not directly coming to our contact edge, contact to the human, but of course it's another dimensions where it is going and how it is creating the problem. So looking into the different aspect, we have to see into how we can change the land use pattern of the commuting. Apart from that, there are so many policies which are been observed in during the corona period, lockdown period, like work from home, and many of the department. I know that in many of the ministry, they have the offer to work from home. So that's the another dimensions to reduce the trip length.
And apart from that, we have the new digital revolution, which called as e-commerce. So e-commerce has also a lot of role to play, and already we are used to take the services from many of the e-commerce vendor, even for the food, not for the other sources like Amazons and all. The already Flipkarts are there, but even for the food supply also, we are now much dependent. And probably this is another way to reduce our trip. Like if you are going outside, hopefully maybe 4 person going together, and then it will attract the trips, and then again trip will generate the fuel consumption, and then from fuel consumption generate to the carbon emissions. So it all are linked. So hopefully the intervention of digital technology, intervention of artificial intelligence, and intervention of our existing low-cost living style. Already many of the speakers last time also we discussed about our low-cost living style and lifestyle, we can say. And probably we have to look into the holistic way, how, because the now even the developed country like Japan, they term lifestyle quality of life as a most important parameter rather than the human development index. So how we best look into the aspect of quality of life and create our culture. Already we have the different culture in every part of our India. It's available. We are deep-rooted society, and that is very linked with our nature. So probably best thing is look back our customs, look back our golden traditions, and bring into the current travel patterns, bring into our day-to-day lifestyle. Hopefully the target of COP27 will meet it. And of course, decarbonization of transport probably will able to get some benefit of making these changes. So thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Ravinder Kumar, for very details like all the intervention in transport sector and other related sector. Very important. Thank you, sir. Before going to the other speaker, I'll just share in 5 minutes some kind of whatever the release by the low carbon strategy by the India. I'll just share my screen. जैन साहब आप थोड़ा म्यूट कर ले, फिर आपको बुलाते हैं जस्ट मिनट के लिए. I don't know, just a minute. I'll just again share screen. There's some issue. Just a minute. I'll just. Just a minute. I'll just look carbon. लाना के नहीं तुम ले लो इधर आके क्या दवाई वहाँ पर धूप आ जाए यहाँ धूप में या थोड़ा विजिबल है ये स्क्रीन प्लीज. हाँ that's right. यस सर. जी. तो जो अभी रिलीज हुआ है लो कार्बन का, मैं सबको ही भेज दूंगा. अभी ये जो है लो कार्बन जो इंडिया का जो अभी 14 नवंबर को रिलीज किया है, इंडियाज लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. सो बेसिकली इसमें जो इसके करंट जो हाईलाइट्स हैं, आई जस्ट रन थ्रू. इसके बाद आप सब लोग देख लें. ये अभी मतलब जो है सबको ग्रुप में डाल देंगे. इसमें इंडिया लॉन्ग टर्म में ये फोकस ये सभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. मोर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड ऑल सब पे फोकस किया गया है.
एंड इसमें जो टाइम इतना नहीं होगा, बट डेफिनेटली जो इसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं मैं जस्ट बता देता हूँ, और इसको हम ग्रुप में भेज देंगे। काफ़ी बड़ी है ये जो बुकलेट है, इसका जो इन्होंने रिलीज किया है MOF ने। या अभी मिनिस्टर ने, ऑनरेबल मिनिस्टर ने रिलीज किया। तो इसमें जो इनके हाइलाइट्स हैं, जो लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है फॉर इंडिया जो है, इसमें इसके मेन हाइलाइट्स हैं जो लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट प्लान है इसका इंडिया का, उसमें जो है एक्सपैंड रिन्यूएबल्स एंड स्ट्रेंथन पावर ग्रिड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया that was the so with this India aims to rapidify expands its renewable energy capacity in the short to medium term while strengthening the electricity grid and enhancing its flexibility. ये बहुत बड़ा important area है ये। Then greater use of nuclear energy, explore a greater role for nuclear energy and enhance support for R&D into future technologies such as green hydrogen, fuel cell and biofuels. तो ऑलरेडी जो एथेनॉल एंड प्रोग्राम्स, बट फर्दर टू इसके लिए मोर R&D ऑन दिस एरिया। देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट द एनर्जी कंजर्वेशन, appropriate demand side measures like energy efficiency measures, particularly Bureau of Energy Efficiency and other departments already doing the lot of 5-star rating and things like green building and all the different measures are there, but definitely more on the focus on energy conservation. Then the rational use of the fossil fuel. While the share of the coal in the installed capacity and supply of power will decline, coal will be needed for our this power and energy also. So this is very important. Definitely the rational use of fossil fuel is one of the important area. Then low carbon growth, the enable focused transition towards low carbon development. This is the definitely, and the that is definitely जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डॉक्टर रविंदर ने बताया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लो कार्बन ग्रोथ के लिए, बिकॉज वी हैव टू बी जो भी अपना ट्रांसपोर्ट जो है डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपका लोकल ट्रिप्स हैं, जो दी बाइक एंड बाइसिकल्स एंड थिंग्स लाइक, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लो कार्बन ग्रोथ। देन शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स जो है, ऑप्टिमम एनर्जी मिक्स, द कॉम्प्लीमेंटिंग नेशनल डेवलपमेंट, जो इसके बाद जो है सिनेरियोज हैं इसके लिए, बिकॉज वी हैव टू कीप बैलेंस, वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी नीड ऑल्सो एनर्जी, सो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये डिफरेंट, ये आपका सभी इसमें बहुत डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को आई शेयर, ये डिफरेंट मिनिस्टर्स के मैसेज हैं और इसमें क्या क्या जो है इसमें किया गया, जो ये प्रोग्राम जो पर्टिकुलरली फोकस है इस पे, जो इसका है इंडियाज जो है लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये पर्टिकुलरली, तो ये हम इसको भेज देंगे। सो अभी हमारे पास वी हैव दी जस्ट अबाउट 15 मिनट्स, सो विल डिस्कस विद द अदर एक्सपर्ट्स। सो ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, पीपल आवर other members can see, and definitely in future we can have any comment on that, so definitely we can discuss. So we'll stop here with this and we'll further continue with the our expert members. Just I want to share, I'll send it to the group that way. So now request before going to Jain साहब, अगर कुछ want to say anything, Mr. PK Jain, अगर कुछ you want to say? अभी जो बात हुई थी जी सर। मौसम के हिसाब से आपने कहा कुछ खाना भी खाना चाहिए और फल भी खाना चाहिए। साथ साथ मेरा सजेशन ये है कि जो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे पंजाब में इस समय पानी का संकट होता है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल बिल्कुल डिप्लीट हो गई है और उसका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इतना अंडरग्राउंड में चला गया है कि उसकी वजह से कैंसर जो है उनके यहाँ सबसे बड़ा डिजास्टर है नेक्स्ट टू नेचुरल डिजास्टर्स। तो मेरा ये सुझाव है कि ये फसलें जो हैं मौसम के हिसाब से के साथ साथ जिस जगह पानी अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से भी उनको साइकिल चेंज करना चाहिए। और कुछ साल पहले सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज ने भी अपने लेक्चर में बताया था कि उन्होंने भी ये सुझाव दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो अपनी जो है क्रॉप साइकिल को मॉडिफाई करें डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। So this suggestion may be passed on to the appropriate people. Thank you. Thank you. That's very very important because दो अभी हमारा जो particularly जो एयर पोल्यूशन का इशू जो है, स्टबल बर्निंग का, दिस इज ऑल्सो लिंक टू दी
दिस साइकिल, बिकॉज जो पहले के नहीं होता था, बिफोर अबाउट 2010 के पहले ये इश्यूज नहीं थे, बिकॉज जो ये पर्टिकुलर इनका जो ग्राउंड वाटर का जो बिल आया है उसमें क्रॉप्स का जो पैटर्न चेंज हुआ कि आपको जुलाई से पहले आप इसको नहीं कर सकते, तो सोइंग जो सीजन चेंज हुआ उसकी वजह से इसका साइकिल जो बढ़ गया और नवंबर तक शिफ्ट हो गया, और उसके बाद लोग जो विंडो बहुत कम हो गई, तो इसलिए लोग सेकंड जो क्रॉप आने के पहले दे हैव 15-20 डेज दे स्टार्ट बर्निंग द थिंग्स लाइक। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो क्रॉप का जो सीजन है इसको, ये दिस इज आल्सो लिंक टू नॉट ओनली वाटर पोल्यूशन, आल्सो लिंक्स टू एयर पोल्यूशन। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन है, और जैन साहब ने बताया, बट ये गवर्नमेंट हरियाणा दोनों को है, दे हैव टू थिंक ओवर, और आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग इस दिस लाइन कि इसके जो कॉज किस तरह की क्रॉप और किस तरह की जो इनकी स्पीसीज हैं वो लगाई जाए, सो दैट कि वो पर्टिकुलरली बिफोर जो है सितंबर तक ही उनका जो है टाइम पीरियड हो जाए। थैंक यू जैन साहब, बिल्कुल। थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट नीरज त्यागी जी, इज ऑलवेज इन दी ऑल दी डिफरेंट जो हमारे टॉपिक्स होते हैं काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनका स्टडी करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट नीरज त्यागी जी सो से फ्यू वर्ड्स। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू, और परितोष त्यागी जी को प्रणाम, सभी विद्वान लोग जो हैं उनको भी प्रणाम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे त्यागी साहब, परितोष त्यागी साहब ने फसल के बारे में भी कुछ कहा था, सोइंग ऑफ सीड्स, लेकिन जो इंडिया है उसने अपोज किया है ड्राफ्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर जो COP27 में, और India has opposed the developed world's effort to extend the scope of mitigation to agriculture at the ongoing UN climate summit in Egypt, saying rich nations do not want to change their lifestyles to reduce emissions and are searching for cheaper solutions abroad. And expressing concern over the draft decision text on the Coronavia joint work on agriculture, India said, developed countries are blocking a pro-poor and pro-farmer decision by insisting on expanding the scope for mitigation to agriculture, thereby compromising the very foundation of food security in the world, a source in the Indian delegation has already said. India made it clear that the world is facing a climate crisis today because of the excessive historic cumulative emissions by the developed nations. एक जो क्लियर कट डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन के बीच में रिफ्ट थी, वो यहाँ पर उभर के सामने आई है, चाहे वो फाइनेंस का मामला हो या एमिशंस का मामला हो या इवन फॉसिल फ्यूल। इंडिया ने जो ड्राफ्ट प्रपोजल है उसमें फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने का एक प्रपोजल रखा था। सारे यूरोपियन कंट्रीज ने उसको सपोर्ट भी किया था, लेकिन उसको ओमिट कर दिया ड्राफ्ट प्रपोजल में, उसको कंसीडर नहीं किया गया। अब आप कोयले से प्लांट चलाएंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा तो और क्या होगा, तो फिर हम कैसे उसको मीट आउट कर पाएंगे जो भी हम टारगेट रख रहे हैं COP27 में। India made it clear that the world is facing a climate crisis today because of the excessive historic cumulative emissions by the developed nations. And in most developing countries across the world, agriculture is done by small and marginal farmers who toil hard and brave the vagaries of extreme weather and climate variability, as well as the additional stress of climate change. By seeking to extend the scope of mitigation to agriculture, the developed countries are wanting the world agriculture lands and seascapes to become a site of mitigation for their profligate and excessive emissions. Mainly जो मैं देखता हूँ जो भी एनवायरमेंट की हमारे मीटिंग्स होती हैं उसमें दो चीज हर्डल है, एक तो प्रॉफिट मेकिंग और दूसरी पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। उसकी वजह से हम घूम करके फिर वहीं आ जाते हैं और जो हम करना चाहते हैं, जो टारगेट्स मीट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और जैसे स्ट्रेटेजिक जो हमारे ट्रांसपोर्ट में ये बायोफ्यूल पे आ रहे हैं, फ्यूल सेल पे आ रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पे आ रहे हैं, तो जो पुराने व्हीकल हैं वो स्क्रैप हो जाएंगे। उस स्क्रैप को डील करने की कोई कॉन्क्रीट वो नहीं है। पहले भी हमारे इस फोरम में डिस्कस हो चुका है कि स्क्रैप के लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट तो है ही, एक स्क्रैप के लिए अलग से मिनिस्ट्री फॉर्म होनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, जिससे कि हम सुनियोजित तरीके से स्क्रैप को डील कर पाए। पुराने व्हीकल तो स्क्रैप होंगे ही होंगे अगर हम उनको फेज आउट करेंगे तो।
ये सारी चीजें ऑन कार्बन रिमूवल, द फोकस विल बी ऑन इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल फिजिबिलिटी ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, जिसको हम CCUS भी कहते हैं, which is highly uncertain. A transition to a low carbon development pathway will involve cost pertaining to the development of new technologies, development of new infrastructure, and other transaction costs. In the longer term, such a transition will also have broader economic impacts. Several estimates regarding India's financial needs exist. Many of them focus on the energy sector, including industry, buildings, and transport. Estimates vary across studies due to differences in assumptions, coverage, and modeling approaches. Modeling approaches भी अलग-अलग हैं. 2030 तक, बजाय 2050 के 2030 तक डेवलप्ड नेशन कुछ टारगेट्स को मीट करके दिखाएं, कि एग्जांपल सेट करें डेवलपिंग नेशंस के सामने. In general, finance needs and the domestic financing gap are considerable, indicating a need for greater international support. And meeting finance needs require mobilizing and scaling up financial resources internationally, as well as mobilizing domestic finance. International sources include multilateral and bilateral sources, dedicated climate funds. अब fossil fuel में जैसे कि हमारे ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के, वो बीच में से ही मीटिंग छोड़कर चले गए थे जैसी फॉसिल फ्यूल की बात आई थी. तो ये सब नोट डाउन करने वाली चीजें हैं. इसमें कोई पॉलिटिक्स प्ले नहीं होनी चाहिए. प्रॉफिट मेकिंग या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते रहेंगे तो हम एनवायरमेंट के ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे. इंटरनेशनल सोर्सेज इंक्लूड मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल रिसोर्सेज. डेडिकेटेड क्लाइमेटिक फंड्स होने चाहिए, एनवायरमेंट फंड्स होने चाहिए. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स एंड द प्राइवेट सेक्टर विल बी द की. तो इंडिया का जो लॉन्ग टारगेट है LEDS है, is an important statement of intent to pursue low carbon strategies for development and a sound beginning toward doing so. The strategy is firmly and appropriately anchored in consideration of climate equity. इंडिया ने क्लाइमेट इक्विटी की बात की है. And plans for low carbon development. CPR said in a statement, India LEDS should be viewed as a living document. Future iterations should emphasize robust, clearer identification of sectoral co-benefits and trade-offs, and more detailed discussion with states. तो ये मैं थोड़ा सा बस कहना चाहता हूँ. बाकी तो इतना बहुत कुछ बोला है. डॉक्टर रविंद्र कुमार जी ने जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह से भी जो पॉल्यूशन होता है उन पर भी शायद पॉइंट आउट किया है. तो एरोप्लेन के जो फ्यूल है उस पर भी थोड़ी रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए उस फील्ड में भी. ये मैं यहाँ थोड़ा सा कहना चाह रहा था. थैंक यू नीरज जी. थैंक यू फॉर योर वेल इन्फॉर्म्ड योर व्यूज. आपने बहुत ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया. Anybody, Rajesh Sharma ji or Khandelwal ji, anything you want to say, anybody, or we can conclude after that? Yeah. Any views? नहीं अनिल जी, आप ही अभी आज इस बार मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं कहीं फंक्शन में हूँ. हाँ नहीं, मुझे पता था आप बाहर में हैं, तो कोई नहीं. थैंक यू सर, थैंक यू है. तो that we were discussing. सर त्यागी सर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ? एसके त्यागी सर आपका. चलिए, आई थिंक जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अभी हमने इंडिया ने लो कार्बन जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया, डेफिनेटली इसका जो है इम्पैक्ट है. सो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम जो लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज विल इन्वॉल्व डेफिनेटली द कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जो होंगी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा, and other transition cost. So definitely a lot of the जो financial cost going to be involved जो है. और longer term जो है such transition will also have जो है broader economic impact. Several जो इंडिया का जो financial needs हैं और estimates हैं, तो ये बहुत ही important होगा. So meeting financial need is also very important, क्योंकि हमने तो अगर हम कोई भी strategy adopt करते हैं
डेफिनेटली एवरीथिंग लिंक्ड विद दी इंडियाज फाइनेंस, चाहे हमारी कोल पॉलिसी हो कि हम जो भाई हम 2070 तक है, बिकॉज हमारी इंडिया की अपनी जो है वी आर डेवलपिंग वर्ल्ड, और जो है हमारी अपनी एनर्जी नीड्स हैं, वी कैन नॉट मीट एवरीथिंग विद द रिन्यूएबल्स एंड द अदर न्यूक्लियर, तो डेफिनेटली वी हैव टू कीप बैलेंस ऑन दैट। तो ये सब जो फाइनेंशियल हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिया ने तो डेफिनेटली बहुत ही प्रोएक्टिव होके चला है, तो चाहे लाइफ का इश्यू हो, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये तो हमारे ट्रेडिशंस है जो है, जो बेसिकली जो हमारा अल्टीमेटली जो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट है इंडिया एलटी लेट्स जो है, इंडिया जो है लॉन्ग टर्म जो लीड जो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, ये एज ए बेसिकली एज लिविंग डॉक्यूमेंट है हमारा, एक तरह से उसको हमने डॉक्यूमेंटेड कर दिया, अदरवाइज तो वी आर ऑलरेडी, जो कोई भी चाहे रिसाइकलिंग का हर चीज का हो, वी ऑलरेडी डूइंग, हमारे वेस्ट का तो हम सर्कुलर इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं, कोई भी हमारी चीज होती है जब तक उसका 10 यूजेस के बाद, चाहे जैसे हम अगर कोई क्लॉथ भी होते हैं तो हम बिल्कुल किसी ऐसे नहीं हम करते कि हमने एक बार ये किसी को, चाहे वो डोनेट करें, पुअर्स को करें, या उसका घर में यूज करें, या कोई भी मटेरियल को हम नंबर ऑफ टाइम्स जब तक यूज नहीं करते तब तक हम उसको थ्रो नहीं करते हैं, तो ये हमारे तो ये कल्चर में है। तो डेफिनेटली ये जो लो कार्बन लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है, लो कार्बन इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, इंडिया की ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स रहेगा, और इसमें जो है आई थिंक कॉपरेशन विद दी ऑल स्टेक होल्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो गवर्नमेंट जो रहेगी मशीनरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म जो इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स है नीड टू बी कंडक्टेड विद दी वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग दी स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, यूथ्स हैं जो भी हैं, एंड RW हैं, NGO हैं, एंड अदर जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, तो ये बहुत जब तक ये ट्रांसलेट नहीं होगा डाउन द लाइन, तब तक ये डॉक्यूमेंट न रह जाए, आई थिंक इट शुड बी मोर रिलेटेड, और मोर जो है ये होता रहेगा कि तो जब तक सारे स्टेक होल्डर्स मिलके इस पे काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट मशीनरी खाली इम्प्लीमेंटेशन पे भी नहीं होगा, तो मोर ऑन दी कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, ये सबका रोल बहुत जरूरी है। तो आई थिंक नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद देन विल क्लोज दी सेशन। हाँ, मैं इसके अलावा एक तो ये फॉसिल फ्यूल का जो इन्होंने नहीं रखा प्रपोजल में, और वो ड्राफ्ट प्रपोजल में से निकाल दिया इंडिया का प्रपोजल कि फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना है, फॉसिल फ्यूल को तो फेज आउट करना बहुत जरूरी था। इसके अलावा जो ड्राफ्ट कवर, द कवर टेक्स्ट आल्सो डज नॉट मेंशन व्हेन ए लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी विल बी लॉन्च्ड एंड व्हाट इट्स कंटूर्स विल बी, इसके ऊपर भी कोई स्पेसिफिक नहीं है फाइनेंस के ऊपर। And poor and developing countries are demanded that COP27 concludes with a decision to launch a fund to address loss and damage, a term used for irreparable destruction caused by climate change fuel disasters. ये जो 20 पेज का डॉक्यूमेंट है, described as a non-paper by the UN Framework Convention on Climate Change, is 8,400 words long as compared to the Glasgow Pact, which was around 4,600 words. तो हम वर्ड्स और इनके पेजेस के बीच में घूम रहे हैं, लेकिन कॉन्क्रीट वही है कि डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन के बीच में रिफ्ट है, उसको वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। इंडिया हैड प्रपोज्ड ऑन सैटरडे दैट द टॉक्स रैप अप विद अ डिसीजन टू फेज डाउन ऑल द फॉसिल फ्यूल्स एंड नॉट जस्ट कोल। तो इसमें क्या बुराई थी, इसको फेजिंग आउट का सोचना चाहिए था। एंड साइटिंग द 6th assessment report of the Inter-Government Panel on the Climate Change, Indian negotiators had told the Egyptian COP27 presidency that meeting the long-term goal of Paris Agreement requires phase down all fossil fuels, singling out of sources of emissions for either labeling them more harmful or labeling them green and sustainable, even when they are sources of greenhouse gases, has no basis in the best available science. तो इंडिया को इस डायरेक्शन में थोड़ी फाइट करनी चाहिए, नहीं तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत हुई थी। जी और चलिए, डेफिनेटली आई थिंक जो आपने बताया, इंडियन गवर्नमेंट मस्ट बी मोर थिंकिंग ऑन दी दैट साइड, और डेफिनेटली जो भी हमने अब जो हमारा इंडिया का एफर्ट्स हैं दैट विल कंटिन्यू, और हमारा तो जो मिनिस्ट्री का जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट का या अदर रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, दे ऑल वर्किंग टुगेदर इन दैट डायरेक्शन, लो कार्बन जो स्ट्रेटजी पे, और किस तरह से चाहे वेस्ट मैनेजमेंट इशू हो,
और हमें आई थिंक ऑल जो हमारा पर्पज है जो डॉक्टर के HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, कि ये अवेयरनेस, दैट्स व्हाट दी, ये प्रोग्राम इस जो है ये लाइव रहता है, तो इसमें हमारा सभी अवेयरनेस भी होती है। तो हमारा सबका इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे HCFI के इसी अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ लोग भी और जुड़ेंगे। इसको दोबारा से डॉक्टर के अग्रवाल के यूट्यूब फेसबुक पेज पे रहता है, तो इसको दोबारा से भी लोग देखते हैं। तो इसमें हमारे यही है कि हर पर्सन को जो भी अपने एंगल से मैक्सिमम जो है लो कार्बन जो हमारे लाइफ स्टाइल पे इसको लिख चलें और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करके चलें। तो डेफिनेटली हर एक एफर्ट से, और जो गवर्नमेंट के, तो इंडिया का अपना जो कम से कम बेस्ट है, ये डॉक्यूमेंट है तभी ये इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज ये डॉक्यूमेंट नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी ट्रांसलेट इनटू एक्शन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी कंक्लूजन के साथ हम ये सभी स्पीकर्स का और सभी HCFI ग्रुप मेंबर्स का धन्यवाद करते हुए, और डॉक्टर के HCFI की तरफ से इस मीटिंग को आज जो है हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट संडे को 12 बजे न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।